Amid this new coronavirus pandemic, we have found new ways to protect ourselves, but we forget to find new ways to protect our planet from the surge of plastic consumption. We are on our way to make 2020 the most plastic-heavy year in the history of whole mankind. According to sea cleaners and aliens global investors, हम लोगों को 4 क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है. Number 1, huge number of plastic bags. Number 2, huge increase in single-use items. Number 3, an explosion of online food delivery services जो कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं. Number 4, reduction in the recycling rates. This is कोरोना प्लास्टिक आउटब्रेक. और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये एक गलत जानकारी के कारण फैल रहा है. फॉर इंस्टेंस, कई देशों में रीयूजेबल बैग्स को बैन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ ट्रांसमिशन. प्लास्टिक बैग्स आर लिटरली फोर्स्ड ऑन टू द कस्टमर्स. पर यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या ये एक लेजिटिमेट सोल्यूशन है या फिर ये एक बिजनेस है. Greenpeace says that a group of individuals backed by the plastic manufacturer is spreading misleading information to exploit people's fear around COVID-19. वो इस बात को प्रमोट करते हैं कि प्लास्टिक ज्यादा सेफ है रीयूजेबल बैग से. क्या ऐसा है? According to a study done by National Institute of Health, the virus can be stable on plastic surfaces for more than 3 days. तो फिर भी प्लास्टिक वायरस कैरी कर सकता है. दूसरे शब्दों में कहें तो if anything is single use, it doesn't guarantee his safety by any means. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी हम एक ग्लोबल प्लास्टिक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं जिसको अभी रोका नहीं गया तो वो बद से बदतर हो जाएगा. बिफोर कोविड वी वर ऑन आवर वे टू लिव अ मोर इको फ्रेंडली लाइफ, बट नाउ ऑल ऑफ दिस वर्क इज गोइंग टू वेस्ट. ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए नहीं है, हमें एक सोल्यूशन चाहिए. तो सोल्यूशंस कुछ इस प्रकार हैं. We need to aware everyone about this problem. क्योंकि कोविड के कारण हमें हमारी इको फ्रेंडली आदतों को भूलना बहुत ही आसान है. वेस्ट को सॉर्ट करें, यूज रीयूजेबल बॉटल rather than disposable bottles, यूज योर ओन ग्रोसरी बैग rather than those plastic bags. So ये आखिरी पॉइंट उन लोगों के लिए है जो कि अकेले रहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स या जो वर्क करने बाहर रहते हैं. वो लोग स्पेशली ध्यान दें कि हो सके तो अपना खाना घर पे बनाएं ऑर्डर करने के बजाय, क्योंकि ऑर्डर करते समय आप देखते होंगे कि कितनी ज़्यादा पैकेजिंग प्लास्टिक की होती है जो कि यूज एंड थ्रो होती है. और एक इंपॉर्टेंट बात, सिंगल यूज मास्क को अच्छे से डिस्पोज करें. आई गारंटी यू दैट इफ यू गो ऑन अ वॉक राइट नाउ यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सिंगल यूज मास्क डिस्पोज्ड ऑफ इन द ओपन ग्राउंड. Ladies and gentlemen, I know that it is hard to think about the environment when facing something like COVID-19, but for COVID, we would get a vaccine by the end of this year. But for plastic pollution, we don't have any kind of vaccine. It will stay with us for thousands of years. So this World Nature Conservation Day, we should come together and fight against corona plastic outbreak so that our planet should not suffer anymore.